हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप? All right. So welcome. Today we're going to discuss about the heart. So, welcome back to Unacademy NEET PG, and today the topic is heart, and we will be talking about the valves, heart valves, and the heart sounds both. Okay, so let's just start the session right away. And please like and share this video with your friends. I am Dr. Paramjeet. I am a clinical cardiologist and a physician. And since last 4 years, I've been simplifying medical concepts on YouTube for students. So you must have seen my channel, Dr. Education. So now I am with Unacademy. Unacademy may you can join the sessions with two types of subscription. One is a plus subscription, one is an iconic subscription. In plus subscription, you have access on live and recorded classes, and you have many other very top educators to choose from, and then live and test quizzes. There is the option to study from any device, and more than 25,000 questions are also available. If you take an iconic subscription, you get everything there is on the plus subscription, and you get the prep ladder subscription also in addition to that. And remember, we have the MCQ discussions on the Unacademy platform, on the Unacademy application. So on today 4:30 p.m. you can join the Unacademy free of cost special class, and here we discuss the MCQs, and you can put this code there. ये कोड अगर आप डालेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो अटेंड करने को मिलेगा. So remember this code Paramjeet, and with this code, if you buy any kind of package in Unacademy, something like this, then you would get a 10% discount also. So without wasting any further time, let's go on to the heart. So see, before we understand where and how does the heart valve and heart sounds comes from, we need to understand the cardiac cycle. So which is actually a very important topic, and I have explained this in very details in one of my videos also on Unacademy this thing. बट आज हम कार्डियक साइकिल को शॉर्ट में पहले आपको समझाएंगे, जो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता ही होनी चाहिए कार्डियक साइकिल के बारे में बहुत कुछ. ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग, you know, heart goes into systole and diastole. So the contractile part is systole, जहां पे heart blood को बाहर पंप करता है, and there are two parts of the heart majorly, two halves, atrial and ventricular. And there are separate systoles. हार्ट का एट्रियम सिस्टोल करता है तो वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, उस समय वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो ब्लड वेसल्स में ब्लड बाहर की तरफ पंप होता है. वी नो दैट. And blood pressure is greatest during the systole because the pumping of the blood from the heart, cardiac output, gives the pressure to force it, go forwards, and that particular pressure is called systolic blood pressure, which is exerted on the walls of the blood vessels heart pumps. Diastolic blood pressure हमें पता है, it is there. Now this is the diastole, is the part where the heart relaxes and it gets filled with blood from the atrium. Okay, and even atrium relaxes, it gets filled with the blood with the peripheral with the IVCs and other blood coming from the venous blood, the venous return which is coming back. Okay, and blood pressure जो है, because the heart actually relaxes, the blood pressure falls down, right? But it doesn't fall down to zero. There is still a diastolic blood pressure which is maintained to make sure that the blood does not stop its forward flow. It keeps on going forward. That particular blood pressure is diastolic, which is 80, and pulse pressure is the difference between systolic and diastolic, जो है 40. We know this basics. Now, why this is important? Because in conditions where
pulse pressure can be increased, meaning कि systolic blood pressure बढ़ सकता है या फिर diastolic blood pressure कम हो सकता है, right? And this will cause increase in pulse pressure, है ना? या दोनों में से एक होगा या दोनों हो सकते हैं. If the pulse pressure is increased in conditions like hyperthyroidism or aortic regurgitation, right? इस केस में भी हो सकता है, and aortic regurgitation, both of this will cause issues, and there can be decrease in pulse pressure in where the systolic blood pressure falls. So if systolic blood pressure falls like in aortic stenosis, आपका BP, आपका blood pressure भी कम होगा, pulse pressure भी कम, right? So we know the whole structure of the heart, and now we're going to see the heart valves. So as we know, heart has a left side, the left ventricle. There is a left atrium, which is basically here, and this valve between the left atrium and the left ventricle, this one is called the mitral valve because it's bicuspid. तो यहाँ से यहाँ पर हार्ट जाता, blood जाता है, which comes through the pulmonary veins into the left atrium, coming into the left ventricle, then it goes into the aorta, and in while going to the aorta में जाने से पहले उसको मिलती है aortic valve. This is the semilunar valve, which is the aortic valve. This is important to understand, and it should be crystal clear in your mind. Okay, if you really want to understand the concepts, heart valves, if you want to answer questions and understand complicated topics of the cardiology, then these basics should be crystal clear. तो ये aorta गया, aorta ऊपर जाके ये ascending aorta, arch of aorta, and then comes back from the as a descending and thoracic aorta. So descending and thoracic aorta पीछे हो गया. Now similar thing happens here in the right side of the heart. This is the right atrium, which receives blood from inferior vena cava and superior vena cava, and it basically comes down into the right ventricle. और यहाँ पर जो valve है, that is a tricuspid. There are three cusps, so tricuspid valve. And then this particular blood goes from आपके right ventricle से into the pulmonary trunk, which sends the blood into the lungs, both lungs, both sides. So यहाँ पर भी valve है, which is the pulmonary valve. The pulmonary valve is here, right atrium, right ventricle. So this particular circulation, the right side of the heart basically has deoxygenated blood, जो पूरी body से सारा oxygen use करने के बाद आता. Now all the oxygen is not really used, only 30%, 20 to 30% of oxygen is used. So the blood here is 30% decreased in oxygen, and then it goes through the pulmonary trunk into the right and left pulmonary arteries and to the lungs. Okay? And then from the lungs again comes back through the pulmonary veins into the left atrium, and the whole cycle completes. So that is clear. This is very, very clear to you. Simple. अब हम बात करेंगे. Now we will talk about the valves of the heart, and then we will talk about the sounds of the heart. If you have any questions and doubts, you can ask in the chat section, live chat, and if you like, you can comment. I will be happily answering your questions. Okay? Then let's understand the valves. देखो जी. So there are, now that we have seen that there are two valves which are between the atrium and ventricles, which are the mitral, bicuspid, and tricuspid, the tricuspid valve, right? So these are basically called atrioventricular valves. Okay, so they basically prevent the blood from going back into the atria during ventricular systole, because when the ventricles will contract, it will try to push the blood in both ways. Here also it will try to push the blood, and here also it will try, and here the way the valve will close. इसलिए आपके mitral regurgitation normally नहीं होता है, but then if there is insufficient closure of the valves, or if there is any other pathology in the valvular structure, या फिर even if there is dilation of either the atrium or the ventricle, evidently what will happen, the valve size of the
mitral annular size will increase and the valves might not close. पूरी तरह से बंद नहीं होने की वजह से there might be leakages. So it's important to understand why valves are important, why leakage is important. Yes, hi Elon Musk. How are you? So atrioventricular valves, उसका main function है to prevent the blood flow back into the atrium during ventricular system. Okay, and the mitral valve is the main on the left side, and the right side valve is the tricuspid valve. Okay, now in दोनों में the most important one which is exposed to a higher pressure is the mitral valve, right? Mitral valve is exposed to higher pressure because the right side of the heart it has evidently lesser pressure, which is like on an average when 25 mm of He pressure is there in the right ventricle, and जो left ventricle का pressure क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? The left ventricle maximum pressure is 120 का प्रेशर. सो प्रेशर डिफरेंस से आप देख सकते हो there is like a 5 times more pressure in the mitral valve. So over the period of years, which of the valve is expected to get problems first? Which is mitral valve. But that's not the only variable involved, not the pressure alone. This particular right valve, the aortic valve and the tricuspid valve. Now, consider this. Tricuspid valve is basically connected to the inferior and superior vena cava, connected to the whole venous return of the body. So, tricuspid valve is subjected to any fluid overload which is there. So, if there is any fluid overload in the body, अगर body के अंदर fluid overload होता है किसी भी कारण से, चाहे वो decreased urine output हो, ठीक है, चाहे वो increase in any kind of proteins or salt or any kind of fluid overload, it will put pressure into the valve, and any pressure into the lungs, pulmonary artery pressure बढ़ा देगा, that will put pressure into the pulmonary valve and then into the right atrium. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर सिर्फ माइट्रल वाल्व में है, दोनों वाल्व्स के ऊपर अलग अलग कंडीशंस में प्रेशर आ सकता है. नाउ वी हैव सीन atrioventricular valves. Now let's see the semilunar valves. Semilunar valves में now there are, this is an aortic valve A and pulmonary valve. इन दोनों का भी फंक्शन है to prevent the blood flowing back into the ventricles during the diastole. Diastole में जब एट्रियम ने, जब वेंट्रिकल्स ने पंप कर दिया, तब जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, द ब्लड ट्राइज टू कम्स बैक, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ये वाल्व क्लोज हो जाता है. ठीक है, वी नो दैट. सो सेमिलूनर वाल्व जो है, इसके अंदर aortic valve लेफ्ट साइड में है, pulmonary valve राइट साइड में. वी नो दिस बेसिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हार्ट साउंड का प्रिंसिपल जो है वो इन्हीं के बेसिस पे. Both these valves have 3 cusps. So technically, out of these 4 valves, 3 have 3 cusps and only one, that is the mitral valve, has a bicusp. Many times, rather sometimes, the aortic valve ही bicuspid हो जाता है. Bicuspid aortic valve हो जाता है. And bicuspid aortic valve अगर congenitally होता है, then it increases the chances of having aortic stenosis, aortic sclerosis, and these kind of problems in the patient in the future, right? Aortic valves, remember, is on the left side, which is very well subjected to the higher pressure. Okay, now here we are understanding the concepts. Now let's understand heart के valves में sounds कहाँ से आते हैं. Sounds, S1 sound है, which is basically produced by the AV valves, the atrioventricular valves. जब आपका हार्ट सिस्टोल में जाता है, अर्ली सिस्टोल में जाता है, आफ्टर डायस्टोल आपका हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करके सिस्टोल में जाता है, तो it basically tries to push out the blood away from the ventricles, and
there is only two places where the blood can go from the ventricles. Let me just clear this to explain. And it's not so difficult, but the point is many people might know this. Very good. So जब ये ventricle contract करेगा, so there is only two places. Either it can try to go into the atrium, it can try to go into the aorta. Same way here, it can try to go into the pulmonary arch trunk or the right atrium. So here, इसीलिए इसका जो structure है valves का, ये ऐसा बनाया गया है कि when the pressure is from here to up, तो इसमें aortic and pulmonary valves open हो जाते हैं और ये दोनों valves, atrioventricular valves, tricuspid, bicuspid हमारे close हो जाते हैं as soon as the pressure comes here. So that's what causes a lot of sound of snapping the both the leaflets of mitral valve, two leaflets of mitral valve, three leaflets of tricuspid valve. They snap towards each other, और ये snapping का के वजह से there is a vibration created into the heart, and vibration you can be heard as the sound S1. ये S1 साउंड आपका चालू होता है बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ AV valves. ठीक है, दिस इज लाउडेस्ट, heard loudest at the apex, बिकॉज ये यहाँ पर साउंड निकल के आता है, ये वाइब्रेशन कैरी होते हैं यहाँ पर, तो ये एपेक्स बीट पे जब आप जाके स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, यू कैन एक्चुअली हियर दिस S1 द लाउडेस्ट. ठीक है, दिस इज द एपेक्स which is there, which is very commonly seen in the fourth or fifth intercostal space in the mid clavicular line or sometimes थोड़ा और कोने में. So that is what happens. इसमें M1 और T1 ये दोनों होते हैं. M1 और T1 is the component of the S1 sound. It's divided in M1 and T1. इन दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें दोनों का कंपोनेंट्स डू नॉट वेरी विद द रेस्पिरेटरी साइकिल. तो S1 का स्प्लिट नहीं होता है फिजियोलॉजिकली, ओनली एंड ओनली इन पैथोलॉजिकल कंडीशंस S1 का स्प्लिट होगा. तो इंस्पिरेशन लेने पे या एक्सपिरेशन पे M1 V1 यानी S1 के एक ही साउंड आता है. देयर इज ओनली सिंगल साउंड, देयर इज नो स्प्लिट सीन ड्यूरिंग दिस particular sound. Okay. So clinically S1 can be accentuated. Why and when will this sound be accentuated? Whenever, because the leaflets are getting slammed and shut in early systole, and there will be from a greater than normal distance. If there is a greater than normal distance, because they have been drifted closer together, in this there are 3-4 conditions जहां पर S1 sound loud आएगा. तो S1 loud कब होगा? S1 loud होगा, number 1 is if there is a mild mitral stenosis. Mild mitral stenosis. तो Elon asks split का मतलब क्या है? Split का मतलब अभी मैं आपको S2 साउंड के टाइम पे सुनाऊंगा. स्प्लिट का मतलब है एक ही साउंड जो है दो में सुनाई देती है. इंस्टेड ऑफ ओनली ढक, ये आपको सुनाई देगा स्प्लिट. ओके, एक की जगह दो सुनाई देगा वो. इट वुड बी लाइक अ ढड़ंग. ठीक है, इंस्टेड ऑफ ढंग की जगह ढड़ंग सुनाई देगा. तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन्स. और आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि एक तो माइट्रल स्टेनोसिस में ऐसा होगा, और माइट्रल स्टेनोसिस के अलावा आपका होगा ये किसी भी हाई कार्डिक आउटपुट स्टेट में, जैसे टेकिकार्डिया या फिर शॉर्ट एंड पीआर इंटरवल. तो हाई कार्डियक स्टेट, टेकिकार्डिया या शॉर्ट एंड पीआर इंटरवल में क्या होगा, आपका जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद, पी वेव के बाद जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है, विच इज द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसके अंदर डिस्टेंस कम हो जाएगा. मीनिंग जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद बहुत ही जल्दी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हार्ट इज नॉट गेटिंग दीज वेल्व्स आर नॉट गेटिंग द टाइम टू कम, नो. तो उसमें जो प्रेशर है, तो इसमें वेलोसिटी है, वो ज्यादा आ जाती है बिकॉज ऑफ द हाई shorter heart rate, shorter PR interval, increased in heart rate and high cardiac output, even the pressure.
तो हाई प्रेशर स्टेट्स, जब बीपी हाई हो, हाई कार्डियक आउटपुट स्टेट्स, टैकीकार्डिया वाले स्टेट्स एंड शॉर्टेंड पीआर इंटरवल विल इंक्रीज इन लाउड S1. Now S2 क्या है? Just like S1, S2 is when the semilunar valves closes. जो हमने देखा था कि जो हमने देखा था कि यहां से जब कंट्रैक्शन हो जाता है, ब्लड ट्राइज टू गो आउट ऑफ द वेंट्रिकल्स and then when it starts relaxing, blood then tries to comes back. Normally this valve will open and blood comes back from this side, मगर यहाँ पर भी वापस आने की कोशिश करता है and then aortic and pulmonary valves they close again, the sound comes and it's not, ये important point पता है क्या, it's not just the sound of the valves snapping together, it is the vibration created because of the valves slapping together. तो valves में S2 sound is because of the A2P2. A2P2 means aortic valve and pulmonary valve snapping together. So aortic valve and pulmonary valves are snapping together and that's why this particular sound is created. अब यहां पर दो याद रखना, because चार valve मिलके दो sound create कर रहे हैं. एक एट्रियोवेंट्रिकुलर दो वेल्व्स एक साथ स्नैप करते हैं तो M1T1 आपका S1 साउंड क्रिएट होते हैं और एओर्टिक एंड पल्मोनरी वैन A2P2 S2 साउंड क्रिएट करते हैं. तो यहां पर भी दो कंपोनेंट है उसी साउंड के A2P2. ओके, नाउ दिस A2P2 डायस्टोलिक प्रेशर जो एओर्टा में क्रिएट होगा, जब वो आपके वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम हो जाता है तब आता है, तब क्लोज होता है. तो इसमें इट कैन वेरी इन विथ द रेस्पिरेटरी साइकिल, मीनिंग इंस्पिरेशन जब होता है, जब आप लंबा सांस लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, ये जो P2 है ये थोड़ा लेट बंद होता है. तो A2 इज सेम, जैसा है सो है. P2 थोड़ा लेट बंद होता है तो आपको लिटरली दो साउंड सुनाई देते हैं. आपको लिटरली जो हार्ट का लब डब की जगह लब डड़ब सुनाई देगा. So there will be two sound डड़ब डड़ब डड़ब. There will be two sound which is heard on inspiration. तो नॉर्मली अगर आप किसी भी पेशेंट को ऑस्कल्टेट करेंगे और ये वाला जो साउंड है ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज इंट्राथोरेसिक प्रेशर जब आप जब आप इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर आप बेसिकली नेगेटिव बनाते हैं, बिकॉज आप नेगेटिव बनाते हैं तभी आपके जो लंग्स हैं वो हवा खींचती है अंदर, राइट. एंड दिस इन बेसिकली डिड्यूसेस द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, जो पल्मोनरी आर्टरी आपके राइट वेंट्रिकल से निकल रही, राइट वेंट्रिकल से अटैच जो पल्मोनरी आर्टरी है उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है. बिकॉज ऑफ दिस द बैक प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द क्लोजिंग ऑफ द P2 वो कम हो जाता है ना. बिकॉज ऑफ दिस A2 जल्दी बंद होता है और P2 बिकॉज वो प्रेशर कम है थोड़ी देर के बाद डिले ऑफ क्लोजर ऑफ द P2 वाल्व हो जाता है, तो P2 लेट क्लोज होता है. ये समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड और एल्स यू विल कंफ्यूज लेटर ऑन दैट A2 स्प्लिट होता है कि ये S1 स्प्लिट होता है कि S2 स्प्लिट होता है. इट्स वेरी कंफ्यूजिंग for new students. It does happen. So remember, S2 is the one which physiological splitting, S1 does not split physiologically. Okay, this is important to understand, and this can be appreciated in auscultation in the second and third left intercostal space. Okay, second and third left intercostal space. Then there is a paradoxical reverse splitting also, जिसको हम कहते हैं, which occurs in with S2 splitting which occurs in the expiration. मतलब इस पर्टिकुलर पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग में इंस्पिरेशन में स्प्लिटिंग होने की जगह एक्सपिरेशन में स्प्लिटिंग होती है. नाउ in paradoxical splitting pulmonary valves actually closes before, so P2 A2 हो जाता है. Pulmonary valve closes before the aortic valve and the most common cause is the left bundle branch block. Because there is a left bundle branch block, therefore the heart के अंदर जो contraction होता है, it happens in the right side first and then followed by the left side.
That's why in the ECG you get M pattern where right and left heart contract one after the another, or because of that the pressure into the pulmonary valves, pulmonary case is created first, causing P2 first, and then A2 causing reverse or paradoxical split. So paradoxical S2 splitting happens in LBBB. याद रखने का, ठीक है. फिर S3 sound and S4 sound are not very important practically, but then S3 is जब in the middle diastole, जब rapid filling होती है आपके ventricles की, जब water, जब पानी, जब blood आपका आता है atrium से ventricles में, it also causes a lot of vibrations in the ventricle wall, which can be sometimes heard as S3 sound. Okay, so it is basically pressure reflected volume overloaded sound. So this is what the normal thing is. S1 S2 आता है, लब डब इंस्पिरेशन पे there can be, ज्यादा इंस्पिरेशन करेंगे लब डडब because there is a gap. रिवर्स स्प्लिटिंग में लब डडब then ये एक एक्सपिरेशन पे डडब आएगा और उसमें आएगा रब डम डब डम लब डम. So there is something called as a closed fixed splitting also, which happens in pulmonary hypertension cases. Yes, that means S2 always splits either in inspiration or in expiration. ठीक है? Or there can be a closed fixed split. That means S2 always splits but temporarily. If there is a fixed split, continuous split, then the patient has pulmonary hypertension. ठीक है? So then S3 is the sound of filling of the ventricle. So filling of the ventricle, जब भी volume overload होगा तो sound बढ़ जाएगा. सिंपल सी चीज है. वॉल्यूम ओवरलोड कंजेस्टिव कार्डियक कंडीशन में साउंड भी बढ़ जाएगा और साथ में देयर कैन बी रिगर्जिटेशन व्हिच कैन इंक्रीज द S3, जहां पे आपको सुनाई देगा. अगेन मैंने कहा था वाइब्रेशंस की वजह से होता है. दिस कैन बी बिकॉज ऑफ द वेंट्रिकुलर वाइब्रेशन और वाइब्रेशंस ऑफ द कॉर्डेट टेंडिने बोथ. S4 बेसिकली तब होता है जब आपका एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वेंट्रिकल्स के लास्ट पार्ट में फिलिंग करता है. वेंट्रिकुलर फिलिंग में लास्ट पार्ट में एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके वेंट्रिकल फिल करता है. दिस ऑल्सो क्रिएट्स जस्ट लाइक अ थोड़ा सा भरी हुई बाल्टी में पानी डालते हैं आवाज आती है. दैट काइंड ऑफ अ वाइब्रेशन इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय एट्रियल गैलोप. दिस कैन नॉट बी हर्ड विद एनी काइंड ऑफ स्टेथोस्कोप, ओनली बाय इट कैन बी हर्ड इन स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स जहां पे आप S4 हर्ड कर सकते. S3 कैन बी हर्ड बाय द स्टेथोस्कोप. Clinical note, usually S4 is indicating the ventricular compliance. मतलब S4 ज्यादा हो रहा है तो ventricle compliance, ventricle expansion does not happen. Ventricle does not relax as easily as you can, and ventricular hypertrophy, myocardial ischemia can also happen. So these are the 4 heart sounds which you need to understand. I hope it helps. And now please, अभी एक और क्लास शुरू हो रही है. इट विल क्लोज सो दैट आगे आने वाले लोगों के लिए उसमें भी इलॉन जरूर आइए, उसमें भी सारे आइए. वी आर स्टार्टिंग अनदर वन in which we will understand the pressure differences which happens during in the heart in all these situations. Okay.